Now children, evaluation of definite integrals by substitution. Okay, so this exercise we had discussed that if the limits are given, then how do we find the definite integral? That integral we find at the upper limit and value minus the value at its lower limit. Okay, so now if it is we have seen that in integration at times substitution is required. So if substitution is to be done, then how are we going to find the definite integral? Okay, so I'll take up questions straight away from 7.10 to explain you go through the examples on your own. First example here is if you have to integrate from 0 to 1 this expression x upon x square plus 1 dx. So अगर लिमिट नहीं होती इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखो तो ये कैसे सॉल्व होगा? सी यू दिस इज ऑफ द फॉर्म कि ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव 2x, तो ऊपर हमारे पास x है. ओके, सो वी हैव सीन दीज टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस वेयर वी हैव अ फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव इज प्रेजेंट, देन वी सॉल्व देम बाय सब्स्टिट्यूशन. Okay, so to find this integral we'll have to do substitution. So when we do substitution now, we will also change the limits. That is what we have to see, observe here and do. Okay, so like this was your question, integrating from 0 to 1 x upon x square plus 1 dx. So naturally for solving it we put the denominator, that is x square plus 1 as t, differentiating 2x is equal to dt upon dx या 2x dx is equal to dt, जैसे भी आप लिखो. So we had in hand x dx. So from here x dx is equal to 1 upon 2 dt. Alright. Now अब इसमें क्योंकि ये definite integral था, there is one additional step. This is what we were doing in indefinite also. Okay. Now we have to accordingly, अब हमने जब variable change किया है तो हम limit भी change करते हैं यहाँ पे. Okay. These limits were for x. Now we have changed the function from x to t. So now we'll derive limits of t. So when x is 0, ये हमने x substitution किया है तो इसमें x is equal to 0 रखो, t is coming out to be 1. When x was 1, upper limit, put 1 here, 1 square plus 1, that is t is coming out to be 2. So अब हमारे नए function की limits हो जाएंगी from 1 to 2. Limits of t चलेंगी अब. Get it? Okay, so this half dt was there, so half I've kept in front. 1 to 2 dt upon t. अब इसका simple integral 1 upon t dt is log form, तो log t हो गया. अब फिर हम क्या करते हैं, इनको ये limits में find करते हैं value, evaluate. Okay, so half will continue right in front. This would be upper limit minus the lower limit. So that is half log 2. Log 1's value we know is 0. Okay, so our answer would be half log 2. Then your second function there was 0 to pi by 2 under root of sine phi cos phi to the power of 5. Okay, so अब इसमें भी हमारा दिख रहा है यहाँ साइन का फंक्शन है एंड यहाँ रूट भी था, तो वेल अंडरस्टूड है जो रूट के अंदर था इसको सब्स्टिट्यूशन में लेना है बिकॉज फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया. वी हैव नो अदर टेक्निक फॉर फाइंडिंग फंक्शन ऑफ फंक्शन, तो वो हम सब्स्टिट्यूशन से उसको ही वेरिएबल बनाते हैं. ओके, सो वील हैव टू पुट साइन फाई एज t. सो उसका डेरिवेटिव वी शुड हैव कॉस. सो यहाँ फिफ्थ पार है, इस फिफ्थ पार को आप स्प्लिट कर लो, कीप 1 cos phi असाइड बिकॉज दैट वुड बी एज डेरिवेटिव, तो गायब हो जाएगा हमारा. एंड रिमेनिंग फोर्थ पार आई हैव स्प्लिट एज cos स्क्वायर phi स्क्वायर. फोर्थ पार होगी 2 2 जा 4 एंड दिस इज योर फिफ्थ cos phi. Okay, now this by identity, this was written like this to convert it by identity in terms of s sine, so that the entire function comes in terms of sine. So cos square phi is 1 minus sine square phi. Okay, then we have put sine phi as t, so cos phi d phi is dt. Then again you will change the limits. Lower limit was 0, so when phi is 0 your t will come out to be sine 0 is 0. Okay, likewise for upper limit, phi, put phi as pi by 2, so sine pi by 2 which is 1. तो अब आपकी new limits, new variable that is t की होगी 0 to 1. Okay, so that is all. इन substitution वाले questions में क्या होता है कि आपका limit भी change होता है. Okay, and another observation was there. See, इसमें हमने क्या difference था from indefinite. Indefinite में after doing this you go back to x. You replace this t in terms of x. वो यहाँ करने की आपको ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि आपने already अपना limits change कर दिए हैं. ओके, तो वो कंपनसेशन हो जाता है. ये जो लिमिट है 1 to 2 ये t की थी, तो ये मैं t में सब्स्टिट्यूट करके सीधे आंसर निकाल सकती हूँ. सो इन डेफिनेट इंटीग्रल एक तो c लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बिकॉज वो कैंसिल हो जाता है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में.
ओके। सेकंड, आपको यहाँ से वापस उसी वेरिएबल में जाने की जरूरत नहीं होती है अगर आपने लिमिट्स चेंज कर ली हैं तो. We have already changed the limits, so these were limits for t, so we can substitute them here straight away. Okay, so these are two things that you have to keep in mind when you're solving definite integrals by substitution. Okay, all right, I'll continue here. We had reached till here that we had written this whole expression in terms of sign now. So taking sine phi as t, this expression becomes under root of t, and ye aapka 1 minus sine square theta, so 1 minus t square whole square. Okay, open this whole square, डिस्ट्रीब्यूट दिस रूट टी इनसाइड. ये आपका फंक्शन बन गया टी टू द पावर ऑफ एन की फॉर्म का, विच यू नो हाउ टू इंटीग्रेट. सो टी टू द पावर ऑफ एन इज टी टू द पावर ऑफ एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन. तो उसी फॉर्मूला से हाफ प्लस वन पावर होगी 3/2 अपॉन 3/2, सो रेसिप्रोकल 2/3. देन 9/2 प्लस वन विल बिकम 11/2, 2/11 उसका रेसिप्रोकल आ गया. ओके, सो दिस वे यू कैन इंटीग्रेट. ये सिंपल अब इनडेफिनेट इंटीग्रल का हो गया. नाउ विल हैव टू इवेल्युएट दिस एट द लिमिट्स. First the upper limit minus the lower limit. Okay, so upper limit 1 थी, so if you put t as 1 in these, so 1 to any power is 1 only, so यहाँ पे आएगा हमारा 2/3, 2/11 and 2 minus 4/7. and lower limit में 0 है तो सब 0 हो जाएंगे. All right, so that becomes your answer. All right, so that is all you have to keep in mind here, that you don't need to go back to the same variable because आपने already यहाँ पे limits change कर ली हैं. one thing, rest you just have to observe कि okay हमने ये substitution किया है तो ये limit हमारी 5 की थी, अभी इस variable की limit क्या होंगी उनको आप change करके रखोगे. All right. Okay, now there was this third expression where they were asking you to integrate from 0 to 1 sine inverse of 2x upon 1 plus x square. So if you have already practiced enough your inverse functions and your indefinite integral, then you know कि this formula, if you put x is equal to tan theta, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta sin 2 theta का formula होता है. Okay, and यहाँ sin inverse है तो sin inverse and sin theta sin cancel होगा. So we are going to do this substitution then, putting x is equal to tan theta because that's taking your form of trigonometric formula. And if you put x is equal to tan theta, differentiating dx will be sec square theta d theta. You will change the limit, put x is equal to 0, 0 is tan theta, so tan 0 0 होता है इसलिए theta भी 0 हो गया, lower limit भी 0 है. Upper limit 1 था, so tan of what is 1? Pi/4, so theta becomes pi/4. So जब आपने substitution किया ये limit 0 to 1 की 0 to pi/4 में convert होगी. Alright, then sin inverse of, I've put the formula straight away. ये पूरे को मैंने sin 2 theta लिख दिया है. Okay, that's your trigonometric formula. So your sin and sin inverse gets cancelled. You're only left with 2 theta here. 2 I have kept outside. ये 2 scalar बाहर चला गया, theta remains. Then dx was sec square theta d theta. So dx की जगह ये पूरा आ गया sec square theta d theta. अभी ये 2 functions हैं तो हमारे इसमें by parts लगाओगे. Okay, so it was theta into sec square theta. So if you integrate it by parts, first function into integration of sec square theta is tan theta. Has to be evaluated from 0 to pi/4. ये 2 हमारा already scalar बाहर था, उसे आप बाहर रखो या सब दो बार लिखो, it's your choice. Okay, then by parts के next formula में होता है minus of integral of derivative of first function, that becomes 1, and integral of sec square theta which is tan theta. Okay, ये इंटीग्रेट हो गया था इसलिए यहाँ लिमिट्स लिखी हैं, अभी इसमें इंटीग्रेशन होना है तो यहाँ लिमिट्स लिखी हैं. राइट, नाउ पुटिंग द वैल्यूज योर थीटा अपर लिमिट में pi/4 tan pi/4 माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा. Then integrating this further, integral of tan theta is minus log cos theta. So there was already a minus sign in front. एक इसके integral का minus आएगा, so this becomes plus log cos theta from 0 to pi/4. Next step, this 2 बाद में distribute करो. Anyhow, pi/4 tan pi/4 we know is 1, and here now log cos pi/4 minus log cos 0. So 2 I have distributed inside. This becomes pi/2. And here this becomes 2 log sec pi/4 is 1/√2, cos 0 is 1, so this whole becomes 0, cos log 1 is 0. Okay, so pi/2 will copy 2, this log of m upon n is log of m minus log of n. ये फिर 0 हो गया आपका, log 1 is 0, so you left with only pi/2 and 2 ये पार आगे आती है, हाफ पार आ गई, कैंसिल हो गया, so your answer is only this bit.
Alright children, now